Hello everyone, welcome to my channel, The Orange Workflow. So this is the second part of NLP video. I hope आपने first part देख लिया होगा, नहीं देखा है तो you can go back and see it. Also in my folder I have created the videos of all the chapters of class 10th AI. Fine, so do watch them. Now let's quickly start. So what is text processing? Text processing क्या होता है? जहाँ हम अपने raw text को clean और structured बनाते हैं, right? और ये एक बहुत important step है NLP का. अब बात करते हैं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की. टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में टेक्स्ट को स्टैंडर्ड क्लीन कंसिस्टेंट फॉर्मेट में मशीन्स को भेजा जाता है ताकि वो इफेक्टिवली उसको समझ सकें. रॉ टेक्स्ट में क्या क्या होता है? पंक्चुएशंस होती हैं, ये नॉइजेज हैं. पंक्चुएशंस होती हैं, मिक्स्ड केसिंग होता है, इमोजीज होते हैं, एब्रिविएशंस होते हैं, मिस स्पेलिंग्स होती हैं, राइट. सो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वी कैन एटलीस्ट रिड्यूस दिस वेरिएशन. Fine. Now there are several steps of text normalization. Very first is sentence segmentation, then tokenization, then removing stop words, special characters and numbers. Then next is lemmatization, stemming and converting text to a common case. Fine. So let's quickly start with the very first step, that is sentence segmentation. Segmentation means alag alag karna. Fine. So if you have a group of sentences, a paragraph or a group of paragraphs, so each sentence will be separated. Fine. Like for example, NLP is interesting. It is used in chatbots. Do you want to learn it? 3 sentences are there. So after sentence segmentation, all these 3 sentences are segregated. Fine. Now next step is tokenization. Tokenization means each single word is separated, which will be known as tokens. Means NLP breaks down text into smaller units called tokens. Like in this sentence, NLP is fun to learn. So word tokens are NLP is fun to learn, means they are segregated. Now the next is removing stop words, special characters and numbers. Let's first of all understand what do you mean by stop words. Stop words क्या होते हैं? जो बार बार अकर होते हैं ना. They are the common words जो फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं और जिनका कोई खास मीनिंग भी नहीं होता है, जैसे इज, एम, आर, द, ए, एन, इन, ऑन, एट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये क्या है? स्टॉप वर्ड्स है. तो इनको रिमूव किया जाता है, थर्ड स्टेप में हटाया जाता है. स्पेशल करेक्टर्स, जैसे ये सारे स्पेशल करेक्टर्स हैं आपके एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर एट्सेट्रा. नंबर्स आपको पता ही है 0 to 9. तो इस स्टेप में ये तीनों चीज़ें हटा दी जाती हैं. फाइन. नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, कन्वर्टेड टेक्स्ट टू अ कॉमन केस. कॉमन केस का मतलब होता है, देखो, या तो हम कैपिटल में लिखते हैं या स्मॉल में, या टाइटल केस मतलब मिक्स्ड, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल. तो मोस्ट कॉमन जो कन्वर्जन है वो लोअर केस कन्वर्जन होता है. मतलब जो भी हमारे सेंटेंस में करेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे के सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं. कर हम कैपिटल्स में भी कर सकते हैं और टाइटल में भी कर सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन है वो लोअर केस है. फाइन. नेक्स्ट इज स्टेमिंग. अब स्टेमिंग क्या होता है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेमिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एफेक्ट्स फ्रॉम द वर्ड्स टू रिड्यूस देम टू देयर रूट वर्ड्स इज कॉल्ड स्टेमिंग. अब स्टेमिंग में जो ये आपके एफिक्सेस होते हैं ना, लास्ट के, स्टडीज़ है. अब स्टडीज़ में एफिक्स क्या है? IES इज द एफिक्स. फाइन. तो ये क्या होगा? ये आपका रिमूव हो जाएगा. तो आपको क्या स्टेम वर्ड मिलेगा? STUDI. ऑब्वियसली यू विल से दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, बट इन स्टेमिंग दिस will happen. In happiness, what will be removed? NESS will be removed, right? So HAPPI you will receive after the stemming process. तो stemming क्या करता है? stemming जो है सिर्फ एफिक्स को हटा देता है. नेक्स्ट बात करते हैं लेमेटाइजेशन की. अब लेमेटाइजेशन जो है वो बहुत रिफाइंड है. उसमें क्या है? वो एक्चुअल मीनिंग, जो रियल मीनिंग है वर्ड का, वो देता है. जैसे स्टडीज़ है, स्टडीज़ से आपने IES रिमूव किया, राइट. तो स्टेमिंग में क्या हुआ था? STUDI, रॉन्ग स्पेलिंग बन गई थी. बट इन लेमेटाइजेशन प्रोसेस आपको करेक्ट स्पेलिंग मिलेगी, दैट इज STUDY, करेक्ट वर्ड मिलेगा विच हैज़ अ मीनिंग. मीनिंगफुल वर्ड आपको रिसीव होता है. फाइन. इन केस ऑफ हैप्पीनेस यू विल गेट हैप्पी, HAPPY. नाउ देयर आर 3 टेक्निक्स ऑफ NLP. अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. Bag of words, TF-IDF, which is known as term frequency, inverse document frequency, and NLTK, natural language toolkit. So let's quickly start with bag of words. बैग ऑफ वर्ड्स क्या है? ये एक टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पर टेक्स्ट कन्वर्ट होता है नंबर्स में, न्यूमेरिकल फॉर्म में. मतलब बेसिकली हर वर्ड कितनी बार आ रहा है. फाइन. और जहाँ ग्रामर को और वर्ड ऑर्डर को इग्नोर किया जाता है, वर्ड ऑर्डर और ग्रामर दोनों चीज़ों को इग्नोर करके हर वर्ड कितनी बार अकर कर रहा है वो बैग ऑफ वर्ड्स में बताया जाता है. बेसिकली क्या रिटर्न करता है? वोकैब ऑफ वर्ड्स फॉर द कॉर्पस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वर्ड्स, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज़ अकर्ड इन द होल कॉर्पस. नाउ
ये एक एग्जाम्पल है, ये मैंने एग्जाम्पल CBSE की बुक से ही लिया है। तो यहाँ पे क्या था, दिस वॉज द पैराग्राफ, ये बैग ऑफ वर्ड्स में अलग अलग वर्ड्स हो गए सारे, और हर वर्ड की कितनी फ्रीक्वेंसी है, मीन्स इट जो वर्ड है वो 6 टाइम्स आया है, आई 5 times, the 4 times, 2 3 times, and so on. Fine. Now, what are the steps involved in bag of words? Again, most important question. The very first step is text processing. Second is creating a dictionary. Now, text processing means to collect the data and pre-process it. Fine. I'll explain you with the help of example. Creating a dictionary means make a list of all unique words occurring in the corpus. Then create document vectors. For each document in the corpus, find out how many times the word from the unique list of words has occurred. That is document vectors. Next is create document vectors for all the documents. Now let's understand these steps with the help of an example. Now again, this example is also from the CBSE book. 3 documents are there. Fine, you can see document 1, document 2, and document 3. Now text normalization. In text normalization, what will happen? All the words are separated by the comma, right? Aman and Avni are stressed. They are separated with the comma. Document 2 again separated, and 3 as well. As you can see, it's very simple. Next is creating a dictionary. Now dictionary means all these unique words, I repeat, all these unique words are basically collected at one place. Means जो duplicated words है वो remove हो जाएंगे और unique words का collection हो जाता है. That is a dictionary. Fine. So as you can see, Aman, then and, then Avni, then are, stressed, then went. Aman has not come because it is twice. Fine. Now next, create a document vector for document 1. So as you can see, document 1 is Aman and Avni are stressed. Fine. So now what you will do, जो आपने डिक्शनरी बनाई थी ना, ये सारे वर्ड्स आप सिंपल एक टेबल में ऐसे लिख लोगे, राइट करते करते सारे वर्ड्स आपके आ गए। अब आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट 1 के लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाना है। फाइन। तो डॉक्यूमेंट 1 में अमन कितनी बार आ रहा है, अमन 1 बार आ रहा है, तो उसको आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी 1। अगर अमन 2 बार आ रहा होता तो यहाँ 2 लिखते। फाइन। एंड कितनी बार आ रहा है, 1। अवनी कितनी बार आ रहा है, 1। आर स्ट्रेस्ड कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स। अब जो रिमेनिंग वर्ड्स है वो तो डॉक्यूमेंट 1 में थे ही नहीं, तो उनको आपने 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट 1 में थे ही नहीं, राइट। अब अगर सारे डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 का हम क्या बनाएंगे, डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, देखो फर्स्ट का तो यहाँ बना हुआ ही है, वही कॉपी करा है। सेकंड का देखो, अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, तो जहाँ अमन है वहाँ 1 आ गया, जहाँ वेंट है वहाँ 1 आ गया, जहाँ 2 है वहाँ 1 आ गया, ए के नीचे 1 आ गया और थेरेपिस्ट के नीचे 1 आ गया। Same with the document 3. I hope you have followed it. So this completes the bag of words. Now let's understand the most important concept of class 10th AI, that is term frequency and inverse document frequency. 100% this question will come from this portion, and that too of 4 marks. So now what is it? TF-IDF is a numerical technique that measures the importance of a word in a document relative to a collection of documents. So this is the definition basically. ये formula by heart सबको learn करना है. Term frequency and inverse document frequency of a word is equal to term frequency of a word multiplied by logarithm, log of IDF of a word. So basically TF-IDF में दो ही चीज़ें होती हैं, TF and IDF. तो दोनों को multiply कर देंगे और IDF का log निकाल लेंगे. Now let's quickly understand with the example, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल ही आएगा, बेसिकली आपको TF-IDF कैलकुलेट करने के लिए आएगा, टेबल्स बनाने के लिए आएगा. So let's see the same example I have taken. 3 documents are there. Now what will be the first step? So the first step is to create this table. See, we have created this document vector, the same table I have copied there. So you have understood, I hope, in the bag of words how to create the document vector table. So the same document vector table is here. So this is the first step of TF-IDF. Fine. Now after creating the vector document table, what you have to do, you have to calculate the term frequency. Now term frequency is the frequency of a word in one document. Fine. How to calculate it? See, again the same thing, right? The same thing is there. Term frequency. Okay, it is copied here. The next is document frequency. Now how to calculate this document frequency? Just add vertically. Aman 1 plus 1 2, and 1 plus 0 plus 0 1. Avni 1 plus 1 2, R 1, stressed 1, and so on. You have just summed vertically. Fine. So this is how you calculated the document frequency. मतलब कि आपका जो अमन वर्ड है वो complete document में कितनी बार आ रहा है. Fine. Next, to calculate IDF, that is inverse document frequency. अब इसका एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे स्टार्टिंग में कितने थे, 3. फाइन. तो 3 तो न्यूमरेटर में आना ही है सब जगह.
अब डिवाइड करके क्या आना है, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ निकाली है, फाइन। तो न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में ये सारी चीज़ें, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 अमन के केस में, एंड के केस में 1 था तो 3 डिवाइडेड बाय 1, अवनी के केस में यहाँ 2 था तो 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन, fine. So this is how we have calculated inverse document frequency. Now the last and most important part, TF-IDF of a word is TF of a word, that is term frequency of a word, multiplied by log of IDF, fine. Now let's check of Aman. So Aman, what is the TF? TF of Aman means term frequency of Aman. So term frequency of Aman is 1. See here in the first document. Okay, in the first document term frequency of Aman is 1, fine. Now you have to multiply it by that 1 with log of IDF. IDF of that word is 3 by 2. अभी हमने कैलकुलेट करा प्रीवियस टेबल में, तो 1 into log 3 by 2, फाइन. सेम एंड कहाँ आ रहा है, यहाँ पर 1. So 1 multiplied by log of 3, because 3 by 1 is 3. So 1 multiplied log of 3. You don't need to calculate this log. You have to just leave this table as it is. So this is the final answer of TF-IDF. Fine. Similarly, you can do for rest of others. So I hope आपको ये वीडियो समझ आया हो. अच्छा, this is the last topic, that is applications of TF-IDF. Fine. These are the applications of TF-IDF, that is document classification. Document classification क्या होता है? Document को classify करना means उसको डिवाइड करना, उसके जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं. टॉपिक मॉडलिंग, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द टॉपिक ऑफ द कॉर्पस. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अ कॉर्पस. Stopword filtering helps in removing unnecessary words from a text body. So these all are the applications of TF-IDF. Fine. So I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा. So do like my channel, do subscribe it and just follow it. So thank you for watching and wish you all the very best for your board examinations.